can collect your passes from there. So all the Indian media who have not got their passes can collect their. MS Dhoni is recovering well. We have a backup also with us. We will see how it goes tomorrow. He will be assessed before the match. If he is fit to play, he will play. Otherwise, we have a backup. Please raise your hands, identify yourself, one question at a time, and I would also request you to keep your phones on silent and discreet mode before we start this press conference. Ravish. विराट, पहले तो आपके लिए ब्रेक कैसा रहा जो भी आपने श्रीलंका वाली टी20 सीरीज में देखी और ये एशिया कप को कैसे देखते हो स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से और आपको कैप्टनसी क्या पता करनी पड़ेगी? ब्रेक काफ़ी अच्छा था। काफ़ी टाइम बाद थोड़ा समय मिला गेम से दूर हट के थोड़ा टाइम रेस्ट लेने का, और आई थिंक इस लिहाज से ज़रूरी था क्योंकि काफ़ी टाइम से हम लोग नॉन स्टॉप क्रिकेट खेल रहे हैं और एक हर क्रिकेटर का अलग वर्कलोड असेस किया जाता है। मैं अगर 5 मैच की सीरीज़ खेलता हूँ और उसमें अगर मैं रन नहीं बना पाता हूँ तो मेरा वर्कलोड इतना नहीं होगा कंपेयर टू समवन एल्स। तो वो चीज़ एनालाइज करके द फिजियो एंड एवरीवन फेल्ट दैट आई शुड टेक अ ब्रेक एंड क्योंकि अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप में पूरी इंटेंसिटी के साथ खेलना ज़रूरी है और ये एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है हमारे लिए। तो अच्छा था, थोड़ी ट्रेनिंग, रेस्ट, घर पे टाइम स्पेंड करना, मतलब इट वाज अ गुड ब्रेक ऑल इन ऑल। और एशिया कप में ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है वर्ल्ड कप में जाने से पहले। एक ग्लोबल स्टेज पे कंपटीशन है अगेंस्ट द स्ट्रॉन्गेस्ट सब कॉन्टिनेंट टीम्स, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कंडीशंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेंगे वर्ल्ड कप में भी हमें आगे जाके। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू टेस्ट आवरसेल्व्स। हमारा अच्छा यहाँ पे चैलेंज दिया जाएगा, दूसरी टीम्स से हमें चैलेंज मिलेगा और हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। I would request all of you not to use flashes until the press conference is on, please. Next question, Shamya. In the event of MS not taking it tomorrow and after coming in, do you have any thoughts about the batting order? Because of the Partner was batted at the top of the order in T20s wherever he stayed, whether it's Mushtaq Ali or IPL. See, obviously it's a player having a niggle just before the game, and especially someone like MS who is sort of a pillar for us in the middle order. With Parthiv coming in, obviously we'll have to sit down and see if that situation comes in where he has to play. We will have to then sort out the combination, what's the best possible combination for the team in terms of the batting order. But as of now, we cannot, unless we have a decision, we cannot sit down and make a concrete plan. Obviously, discussions will be made. They will happen sometime today during the practice session as to what needs to be done if that situation arises. But yeah, I mean, it's obviously going to be different from what we've been playing with till now, and just have to wait and see what the situation pans out as. I think there's an issue with someone's phone here, and it's buzzing in. And so I would request all the phones to be kept on the mic, please, or on that the speaker, please. All the phones. Please. And also, just for everyone's convenience, we will take first few questions in Hindi or English, and then we'll go to English. So Hindi. Next question from Pragya. It's a great opportunity. As I said, Asia Cup has always been a challenging tournament. It's a tournament that we all enjoy playing. Gives us an opportunity. It's like a mini, sort of event as far as the subcontinent teams are concerned.
It's an opportunity to test yourself, as I said, against the best teams in the continent, subcontinent, and yeah, it's always been a very competitive tournament, and you have to be at your best because you have different oppositions with different set of skills testing you out all the time, and going into the World Cup, as I said, because the conditions are similar, we're probably going to play all these oppositions at some stage. So again, it's as many teams as we play before the World Cup, different teams. It gives us a great opportunity to assess what the teams are like, what the balance is like, what their strengths and weaknesses are, and where do we stand against them, and how the matches have been played. So yeah, it's a great opportunity, I guess, if we see it as a whole package before the World Cup. Shami? Given that the World T20 has been said within very similar conditions, Pakistan and Sri Lanka would be major threats to India's title challenge to World T20. From that point of view, how do you want to utilize this opportunity of playing India? Well, every team is as dangerous in the T20 format. I don't think any one particular team holds the advantage. On that day, anyone can beat anyone. So we are not looking at any team as major threats. We obviously will take the challenge very similarly, be it any team around the world, and that's the way we need to approach a tournament like the World Cup. If you focus on 2 or 3 teams too much, then you're losing out on what you need to do against the rest, and every game counts in this tournament, in this format, and things can change very quickly. Momentum is a big factor in 2020 cricket. So yeah, I mean, both the teams are very strong, no doubt, but we are not focusing on the strengths of the oppositions too much, because we need to back our strengths and find out the weaknesses in the opposition to win games of cricket. So I think the focus will remain that. Atif? Virat, you said that he is almost on an autopilot mode right now. They're playing very well. Sitting at home watching the match TV versus Sri Lanka on TV, how do you assess the bowler's performance? And also, secondly, a word on the Bumrah's fitness. He was slightly uneven. He's come up very well. Yeah, I mean, I think MS was spot on in terms of. I think it comes from the fact that we play a lot of T20 cricket, and we obviously, when we play in the IPL, we have so many games to play and express what we need to on the field, and execute our skills. So we keep getting better with every season, and if you see this team, if you see the number of IPL games being played by all the players, the number is very high. So everyone individually in their own teams in that tournament know what needs to be done at what stage. So I think even MS doesn't need to, he's not required to put in sort of so much thought as to what needs to be done, because the players already have so much experience. So I think it takes a lot of load off him as well, and that's why the fact that he said the team is in autopilot mode, I think that's what he meant. That everyone knows what needs to be done at what stage throughout the 20 overs, be it batting or bowling. Even in the field, people are changing positions themselves, knowing the stage of the game. So I think it's a very good atmosphere the team is in right now, as far as this format is concerned. Everyone's very sure what needs to be done, and it's always a great feeling when you have 11 players who know what they want to do, and they know what they're doing. They know exactly what they want to execute. So it's a great feeling. Plus, Jasprit has been, as MS said, the biggest find in the Australian series. I think he's come on board, and he's bowled with a lot of heart, with a lot of confidence. I think when he runs in, you can sense that he knows, where he wants to get the batsman out. Not just get him out, but he knows exactly how to get the batsman out. And he has a proper plan before he bowls. So I think that's very heartening to see. A guy who can rush the batsman as well, who can bowl the opposite will, got a good slow run. He's got a different action as well, which people are finding it hard to pick at this stage. But he's making the most of it, which I think is very, very important. He's a very confident cricketer, and that shows on the field. So I'm very happy for him. Very happy that he's doing well for the Indian team as well.
I'll take last few questions. Vinod, Kuntal and Jatin. Last 3 questions. Vinod. टीम के साथ आप जुड़े हैं और अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं काफ़ी फ्रीक्वेंटली मीडिया आती रहती है तो अपार्ट फ्रॉम द ग्राउंड जो बाकी डिस्टेंस है ट्रैफिक वगैरह है तो वो सब का भी थोड़ा एडजस्ट करने में 1 घंटा जाना आना कुछ फर्क पड़ता है कि आप लोग यहाँ पर अच्छे से मैनेज करते हैं ग्राउंड सिचुएशन मैनेज करते हैं नहीं, हम सो जाते हैं बस में और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं, इतना प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हम लोग काफ़ी खेले हैं बांग्लादेश में, तो आई मीन इवन बैक होम ट्रैफिक को इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है हमारा भी, तो इतना कोई फ़र्क नहीं है। दिल्ली बॉम्बे जैसे शहरों में आपको पता ही है ट्रैफिक कैसा होता है, तो मुझे तो आदत है दिल्ली में 1 घंटा गाड़ी में बैठने की, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सो जाता हूँ। बट या थोड़े कंडीशंस यहाँ पे डिफरेंट टाइम ऑफ द ईयर में वेरी करते हैं, कभी ड्यू मिलता है कभी नहीं मिलता, तो वो फैक्टर आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि विकेट बहुत डिफरेंटली प्ले करता है यहाँ पे ड्यू में और विदाउट ड्यू बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो हमने इन द पास्ट भी देखा है कि जब ड्यू होता है तो इट्स ऑलमोस्ट अ वन साइडेड गेम, इट्स सब टॉस पे डिपेंड करता है और तो देखना पड़ेगा उस लिहाज से क्रिकेटिंग कंडीशंस। बट आई थिंक ट्रैफिक कंडीशंस मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि मुझे काफ़ी आदत है गाड़ी में बैठने की बहुत देर। Question from there. सभी मैच काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ जो चीज या मैच कुछ खास इंपॉर्टेंस रखता है, विशाखापट्टनम स्क्वाड में मोहम्मद आमिर शामिल हैं, आप उनको वेलकम करेंगे और मैच बॉलर की साइज किस तरह होगी पाकिस्तानी उनके भी है जो आपको करेंगे? जैसे मैंने बोला कि हम हर टीम को एक जैसा ट्रीट करते हैं, एक तरीके से देखते हैं और पाकिस्तान टीम से खेलना मुझे एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगता है क्योंकि जब आप फील्ड पे जाते हैं तो आप क्रिकेट ही खेलने जाते हैं और एक बैट और बॉल से खेला जाता है, तो उसमें कुछ मुझे मेंटली कोई डिफरेंस नहीं लगता और मैंने हमेशा वही चीज़ को फॉलो किया कि हर ऑपोजिशन को सेम तरीके से देखें। और ऑब्वियसली पाकिस्तान जैसे मैंने बोला एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है और हम लोग हर टीम का ये अच्छा करना चाहेंगे और पाकिस्तान की भी अच्छा करना चाहेंगे और काफ़ी कंपेटिटिव मैच होता है क्योंकि स्किल सेट्स बहुत अच्छे हैं दोनों टीम्स में, हमारी टीम में भी और उनकी टीम में भी, दैट्स वाई कंपटीशन अच्छा होता है। और कोई रीज़न मुझे तो कभी आज तक फील नहीं हुआ है और काफ़ी हाइप क्रिएट की जाती है और मैंने पास में भी बोला है कि लोगों के लिए बहुत एक्साइटिंग होता है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, कैसा होगा, क्या माहौल होता होगा, लेकिन ऑन द फील्ड परफेक्टली नॉर्मल होता है जैसे हम किसी भी ऑपोजिशन के अगेंस्ट खेलते हैं। Last 2 questions, Kuntal and Jatin. बस सर, Kuntal. आमिर काफ़ी मुझे काफ़ी खुशी हुई उनको देख के कि उन्होंने जो उनकी गलती थी उन्होंने रियलाइज़ की, उसको सुधारा और न्यूजीलैंड में जाके खेला। बॉलर तो हमेशा से वो वर्ल्ड क्लास रहे, मैं ज़रूर मानता हूँ कि अगर वो ये पिछले 5 साल खेलते तो आज आई थिंक वर्ल्ड के टॉप 2 या 3 बॉलर्स में होते, नो डाउट, जितना उनके पास टैलेंट है, पेस है, दोनों तरफ स्विंग करते हैं, अच्छा बाउंसर है, यॉर्कर मारते हैं, तो बॉलर बहुत अच्छे हैं, उनके पास बहुत स्किल है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। उन्होंने मेहनत करके वापस इस स्टेज तक आए हैं, उसमें बहुत करेज लगती है और आई विश हिम ऑल द बेस्ट। Kuntal. पिछले 2 सीरीज में जिस तरह का प्रदर्शन किया टीम इंडिया ने, कितना डिफिकल्ट होता है टूर्नामेंट में टाइम लेके खेलना। और पहले मैच की बात करें तो बांग्लादेश के खिलाफ मैच है, पिछले सीरीज में टीम इंडिया हार गई थी बांग्लादेश से, तो किस तरह से देखने टैग हम तो सर कोई टैग लेके नहीं आते, टैग तो आप लोगों ने देना है हम लोग जैसे खेलते हैं वैसे टैग मिल जाता है। बट अभी टीम अच्छा खेल रही है, पिछले 2-3 महीने में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है हमने और काफ़ी अच्छे मोमेंटम को लेके आ रहे हैं एशिया कप में, तो आई थिंक इवेंचुअली जैसे मैंने बोला इस फॉर्मेट में हर गेम इम्पॉर्टेंट है और हर गेम पे फोकस करना ज़रूरी है। तो अगर एशिया कप एज अ होल देखेंगे कि हमें अभी से ही सोचेंगे कि जीत जाना है एशिया कप, तो वो दैट्स थिंकिंग टू फार। हर गेम पे फोकस करेंगे तो ग्रेजुअली प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, जो कि हमने किया है पिछले 2-3 महीने में और इसीलिए हमको रिजल्ट्स मिले। हम ज़्यादा दूर की सोचते नहीं हैं, तो ऑब्वियसली अगर टीम अच्छा मोमेंटम लेके आ रही है तो आप कोशिश यही करते हैं कि उसको बनाए रखें, जीतते रहें मैचेस, रन्स बनाते रहें, विकेट्स लेते रहें, तो
कोशिश हमारी वही रहेगी जैसे मैंने बोला, बट इस फॉर्मेट में कोई दूसरी टीम आपको आके सरप्राइज भी कर सकती है किसी भी दिन, वो आपसे अच्छा भी खेल सकते हैं, तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी होगी और उस चीज़ को रिस्पेक्ट देना होगा। हम ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं खेल सकते हैं और दूसरी टीम को रिस्पेक्ट देना बहुत ज़रूरी है, बट अपनी एबिलिटी में बिलीव करना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। Last question, Jatin. Virat, we'll have our numbers, and we've seen, especially in this format, your strike rate for the first few balls is a lot more. Is it a conscious effort? Do you plan on doing that and keeping the lob percentage low? And just a word on Mustafa Zubair. In T20? In T20. Well, I don't know. My plan in my early T20 playing days was get myself in, maybe 10 of 10 balls and then take off. But it all depends on what kind of mindset you're in. I used to think too much about T20 cricket before, saying maybe I don't have the kind of shots that other people have. Maybe I don't have the ability to hit big sixes. So I used to try a lot more, planning too much. Now I just go in and play on instinct. I've come to terms with the fact that I can't hit too many sixes, so I'd focus on boundaries. So yeah, I just sort of molded my game towards that. Try to hit the ball in the gaps and get fours rather than sixes, which is probably a high risk shot. I would rather hit more boundaries than sixes and still get the result. I mean, if you're scoring at 160, still it doesn't matter if you hit 6 or 4 or make it all in ones and twos. So I've come to terms with that. I'm pretty comfortable with the kind of mindset I go in with in this format. So yeah, I mean, maybe that is the difference. I mean, it all depends on your mindset. Some days you can't get away for 10 balls. Some days you're 30 of 10. So I think this format goes like that. Secondly, Mustafizur has done really well in the past 1 year. If you see, since he played against us, he's really bowled well for Bangladesh, and it was exciting to see. 19-year-old, he's come on board and slower balls. Along with bowling at around 140 clicks, that was something that was different for us also, to experience. With the new ball, he was bowling really good slower balls and cutters, and yeah, so we brought in something different to the game, spiced the game up a bit more, which I think is always exciting. You have bowlers coming in every time. You see Kagiso Rabada for South Africa. He's come in. He's a very exciting bowler. So it's very important for the game to have bowlers who can sort of come in and trouble the batsman, because if you're playing in conditions like Bangladesh and a guy can come in and take 4 or 5 wickets and trouble the batsman all over, I think it makes the game more competitive. As a batsman also, you get more competitive, saying that okay, this guy has got different set of skills, so I need to prepare differently, I need to tackle him differently, so it improves your game at the same time as well. So I think big credit to him. He's done really well. He's bowled really well for them, and he's obviously going to be a big factor for Bangladesh in this tournament as well. Thank you very much.